मेरे बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे with the topic of current, and in this case we will do. I had posted some of the questions, वो practice कर लीजिएगा. मैं कुछ और questions कराऊंगा भी आज, but a simple concept we'll go through, and that is the concept of drift velocity. Now we have a conductor that is connected to a battery, and there is a current flowing in the circuit itself. If the current is flowing in the circuit and the value of the current is I, then electrons move in the opposite direction with an average velocity, and that average velocity is called drift velocity. It is the average velocity of electrons in the conductor when a current I flows in the circuit. We want to find out the value of this drift velocity. Now, if you observe that if I choose one of the electrons that is just below Q, and all the electrons are in front of it, they all are moving the same velocity. Let us assume the distance from Q to P is L, and this electron which is underneath the Q covers the whole distance L in T seconds. Then the value of the drift velocity will be L over T. Distance covered by electron in T seconds is L. So this electron will move to this side and cover in T seconds. Now these are the terms we're going to use. Drift velocity will be represented by V. N stands for number of charge carriers per unit volume. E stands for charge of electron, and A stands for cross-section area. So drift velocity can be written as L over T if we know the length and time. But one thing is very clear, that the electron which is moving from Q to P, all the electrons in front of that will also have crossed point P in time T seconds. In other words, all the electrons which are crossing point P in T seconds lies inside this volume of the conductor. So we can say volume of cylinder containing electron passing point P in 1 second will be AL is the volume divided by time. And L over T can be replaced by V. So we get AV. It's the volume of cylinder containing electrons passing point P in 1 second. Number of electrons, and यहाँ पे मैं term use कर रहा हूँ, it stands for number of electrons per unit volume. Every conductor have a specific number of electrons per unit volume. So how many electrons will be there in this volume? If we multiply AL over T by N, we get number of electrons passing point P per second in 1 second. This is not current. Current is charge passing per second. So divide by multiply by E, and we'll get charge passing per second. So my formula becomes NAVE. This is charge passing per second, and charge passing per second is nothing else but current. So I have proved a relationship of current and drift velocity. I is equal to NAVE. And from here, I can find a formula for V which comes out to be I over NAE. N stands for number of electrons per unit volume. A stands for cross-sectional area. E stands for charge of electron. The derivation of this formula is in syllabus. आप जरा फिर से डेरिवेशंस और इनका लिंक एक्सप्लेन कर सकते हाँ, सबसे पहले मैंने प्रूव किया था that length is L. The electrons are moving the length L in T seconds. So L over V is your V, velocity. L over T is velocity. The volume of the
container where the electrons are passing point P in 1 second is AL over T, area into length divided by time. Here L over T is velocity. So I just have replaced L over T by V and I get the formula AV. This is the volume of cylinder containing electrons passing point P in 1 second. If I multiply with N stands for number of electrons per unit area, per unit volume. If I multiply AV, that is the volume, by N, I get number of electrons crossing point P per second. And if I multiply by charge, I get charge passing per second. So charge passing per second is the current. So this is the formula for current. ये as it is आपको याद करना पड़ेगा कि कर ले तो बेहतर है, because they do ask you to find the value of drift velocity in terms of current and charge density. This is called charge density. N stands for charge density, number of charge carriers per unit volume. So from here we see that V is in directly proportional to current and inversely proportional to area. If current increases, velocity increases. If area increases, velocity increases. तो ये फॉर्मूला भी आपको गिवन होगा वैसे तो, मगर इसको ड्राइव करना जो है इट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस. इसकी मैं पिक्चर्स जो है वो मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ, केस यू वांट टू बाद में उसको आप देखना चाहें तो यू कैन डू दैट. ओके, लेट्स सी सम क्वेश्चन रिलेटिंग टू drift velocity. First of all, they ask us what is coulomb. Q is equal to IT. ये फॉर्मूला है हमारा, इसी को हम एक्सप्लेन कर देंगे. The charge passing from a point is 1 coulomb if the current is 1 ampere and time is 1 second. First write the formula and then explain it. We have to prove the drift velocity. The first step, L is the length of the conductor, point P, how many charges passing point P per second, that's the current. So first of all, L is the length covered by the electrons in T seconds. So drift velocity is L over T. AL over T is your volume of cylinder containing electrons passing point P in 1 second. AL over T is the volume divided by time. And from here, we multiply it with N, number of charge carriers. We get number of electrons crossing point P in T seconds. Multiply with charge of electron and you get charge passing per second. That is current. And from here, V is equal to I over NAE. ये start steps हैं which are to be used to prove this formula. And it's a three-mark question, so they regularly ask prove the drift velocity. Okay, now we have two resistors Y and Z placed in series with a potential difference of EMF of 12 volts. We have to find the drift velocity in the Y and in Z. They have told us that they are made from the same material. Y has a diameter D and length L, whereas Z has a diameter 2D and length 2L. Same material means they will have same number of charge carriers per unit volume. N will be same. Velocity is given by I over NAE. Their current will also be same because they are in series. N will be same, E will be same. So velocity will only depend on the value of area. If Y has a diameter D, it has an area A. If the diameter is doubled, area is increased by 4 times. Remember that. That means area of Z is 4 times area of A. So we replace that. Area of Z will be 4A. All the things cancel out and we are left with 1 divided by 1 by 4. And if it is 1 divided by 1 by 4, your answer is 4:1 because 4 goes into numerator for multiplication. Resistance of Y to resistance of Z, we have to find the ratio. Resistance is given by rho L over A.
For Y, it will be rho L over A. But for Z, it will be rho 2L because length is double, diameter is double. So 2L is for the length and 4A is for the area. So rho L over A cancels out 1 divided by 1 over 2. 2 divided by 4, 1 by 2 ho jayega. And this 2 goes in the numerator, becomes 2 is to 1 ratio. Simple mathematics. So resistance of Y is double the resistance of Z. What is the potential difference? Remember, they are in series. We can find the value of the current. If this is 2R, this is R. We have to find the voltage here. Without calculation, I can tell it will be double voltage because जो resistance का ratio होता है वही voltage का ratio भी होता है. So Y will have double the resistance as compared to Z. But let's calculate that. First of all, I calculate the value of current. I is equal to 12 divided by 2R plus R, 3R. Multiply by R. In this case, it is 2R because resistance of Y is 2 times R. R cancels out. We get 12 divided by 3 into 2. And the answer is 8 volts. Power dissipated in Y and power dissipated in Z, we know that they both have same current. So we can use the formula I square R for power. I squared 2R divided by I squared over R. R and R cancels out, so we get 2 is to 1 ratio. I also cancels out because they have same current, so they will automatically cancel out in this case as well. Okay, you want more article first? Just give me 1 second. I'm posting the question there. Okay, here we have a concept of cells in series and cells in parallel. First, series. If we place cells in series, minus plus minus plus minus plus, for example, we have 3 cells in series, the total EMF will be increased by 3 times. We'll simply add them up or multiply by number of cells in series. So EMF is increased if we have cells in series, but resistance also increases because they are in series. Their internal resistances will also be added. Simple addition. If we get higher voltage, but if one of the cell is damaged, then whole circuit does not work. This is a disadvantage of series, that if one of the circuit cells is not working, then the whole circuit does not work. Cells in parallel, one after the other, they all are parallel. Output will be same, that is 1.5 volt. What is the advantage? Advantage is that each cell will contribute towards the main current, so the arrangement lasts longer because each cell will contribute to the main current. If we are using just one cell, it will be depleted less time. So this is one advantage, that it will last longer. Number 2, if one of the cell is damaged, still the circuit will work. Okay, one another example. If we, for example, we have 3 cells arranged, but one of the cell is arranged in reverse. What will be the net EMF? Now these 2 cells will add up. They will be 3. And this will be in negative, that if this is E1 and this is E2, in this case, E2 minus E1 will be your net EMF. We'll be subtracting the smaller cell because it will be against the EMF of the larger cells. So your net EMF will be 1.5 volts. Okay, let's see another question. फिर आप वो पिछला वाला एक फिर से स्लाइड पे जा सकते हैं? हाँ जी, दोबारा से आ गया इस पे. Solution
अम, सर सीरीज में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी? बिल्कुल इंक्रीज होगी, लिखा हुआ है। आप और इसमें जी। पैरेलल पैरेलल और में काम हो जाएगी। हाँ, और पैरेलल में ईएमएफ वही सेम रहती है? हाँ, स्क्रीन में सेम रहेगा, मगर इसका फायदा ये है कि इट विल लास्ट लॉन्गर, और इनमें से अगर कोई सेल खराब हो भी जाता है तो भी ये सर्किट चलता रहेगा। ठीक है सर। Okay, let's see another question. Just give me 1 second. Okay, I'll do this question first. We have defined resistance. Resistance क्या होती है? It is a ratio V over I, where V is the potential difference across the resistor and I is the current flowing through it. अब उन्होंने हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक सेल है, उसकी EMF 3 वोल्ट है, वी हैव इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r एंड वी हैव एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। उन्होंने हमें पावर और वोल्टेज का ग्राफ दिया हुआ है। वोल्टेज, और ये वोल्टेज इज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, it increases and the power increases, then we get maximum power and then the power starts to decrease again. ये वही ग्राफ है जो मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे, दैट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड रेजिस्टेंस। तो वो कहते हैं फ्रॉम द ग्राफ व्हाट इज द मैक्सिमम पावर, तो हम यहां से रीड करेंगे मैक्सिमम पावर, इट इज 1.13। पोटेंशियल डिफरेंस, आप वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें ऑन द एक्स एक्सिस, तो मैक्सिमम पावर पे आपके पास यहाँ से जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ रही है वो 1.5 आ रही है। अब मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम वोल्टेज के लिए वो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। पावर का फॉर्मूला 3 है, आई स्क्वेयर आर वी स्क्वेयर ओवर आर एंड आई स्क्वेयर आर। हमें वी मालूम है और पावर मालूम है, हमें रेजिस्टेंस निकालनी है, तो हम यहाँ पे वी स्क्वेयर ओवर आर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। From here, we get the value of resistance as 1.99 or 2 ohms. So we have this. We have the value of resistance capital R. We want to find out small r. We have a formula. From here, we can find out the value of current first. जो R में flow करेगा वही small r में भी flow करेगा. So current in this case comes out to be 0.75. And we also know that EMF is equal to I into capital R plus I into small r. We know the EMF, we know the voltage across capital R, and we know the current. Simplify that to get the value of resistance, and in this case you observe that you get the resistance equal to the external resistance, because always maximum power is achieved when internal resistance and external resistance are equal. By reference to figure, it can be seen that there are two values of potential difference for a power of 1.05. 1.05 पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो I have two powers. We have two voltages. एक्सटर्नल वोल्ट रेजिस्टर के क्रॉस या तो वोल्टेज 1.1 होगी या फिर वो ज्यादा भी हो सकती है, दैट इज 1.7 1.9। स्टेट विद रीजन वैल्यू ऑफ V रिजल्ट इन लेस पावर डिसिपेटेड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, टोटल वोल्टेज तो 3 ही है, अगर आप 1.1 वाला यूज करेंगे तो मोर वोल्टेज विल बी अक्रॉस स्मॉल आर, इसका मतलब है मोर पावर विल बी वेस्टेड। So we always choose high voltage in the external circuit so that less voltage is developed across resistor R. This is how we explain the concept that less power will be wasted in the internal resistance if more voltage is across external resistance. Clear? This is how we जी। explain the concept कि जब आपकी बाहर वोल्टेज ज्यादा होगी तो अंदर वोल्टेज कम होगी, करंट सेम है, current is same. So if current is same, there will be more power developed externally and less power developed internally. Just give me 1 second, I'll just take the picture. Okay, we have
अब पैरेलल सर्किट, पहले उन्होंने हमें कहा कि हमने एक वायर लगाई हुई है ए बी, और इसके पैरेलल एक और सर्किट लगाया हुआ है जिसमें दो रेजिस्टर्स हैं 4 और 2 ओम्स जो आपस में सीरीज में है। सेकेंड उन्होंने बताया हुआ है कि 1 मीटर की जो लेंथ है इट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम्स। अब वो कहते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन I1 I2 एंड I3। ये बेसिकली किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कल। मगर यहां पे सिंपल सा रूल है कि अगर I1 करंट ए पे आ रहा है एंड फ्रॉम ए वी हैव टू करंट I2 एंड I3 लीविंग, तो जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट लीव भी करेगा। Therefore simple relationship is I1 is equal to I2 plus I3। ठीक है। अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1। तो सिंपल रूल यही है कि हम पहले I2 निकाल लेंगे और I3 निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो I1 आ जाएगा। जो वायर है इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, वोल्टेज 12 ही होगी बिकॉज ये रेजिस्टर और 4 और 2 ओम का जो सम है वो आपस में पैरेलल है। सो I2 विल बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 10 बिकॉज I2 की रेजिस्टेंस जो वायर की रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, 12 ओम है। 12 डिवाइड बाय 10 करूंगा मैं तो आपके पास 1.2 आ जाएगा बिकॉज EMF 12 है, रेजिस्टेंस 10 है। I इज इक्वल टू V/R। I3 के लिए टोटल रेजिस्टेंस 6 है, वोल्टेज यहां भी 12 होगी बिकॉज इट इज पैरेलल। सो आई हैव I3 as well and I1 is equal to I2 plus I3, 1.2 plus 2 that is 3.2। अब वो कहता है जी व्हाट इज द पावर इन द मेटल वायर एंड व्हाट इज द पावर इन द सीरीज रेजिस्टर। हमें इनका करंट मालूम है, हमें रेजिस्टेंस मालूम है, तो हम I²R इस्तेमाल करेंगे फॉर वायर। उसका करंट था 1.2, उसकी रेजिस्टेंस थी 10। एंड सिमिलरली फॉर सीरीज टोटल रेजिस्टेंस 6 है, करंट 2 था। I²R, हम V²R भी लगा सकते हैं इफ वी वांट टू। अब जो चीज आ रही है वो थोड़ी समझने की है कि कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D। जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं कि C का पोटेंशियल क्या होगा, तो आपने ये देखना है कि C से आगे जो वायर है उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो इसकी रेजिस्टेंस 4 ओम्स है। और CB जो है, ये वायर जो है ये 60 सेंटीमीटर होगी, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस 6 ओम होगी। तो जो वोल्टेज CB में डेवलप हो रही है वही C का पोटेंशियल है। इसी तरह D का पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम्स। जब हम कहते सर हैं मुझे पोटेंशियल, जी, मुझे एक चीज समझ में आई। आपने ये जब पावर की रेशियो निकाली तो 1.2 उसको 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया और 2 को फिर 6 से क्यों किया? मुझे उस चीज की समझ नहीं आई। बेटा पावर का फॉर्मूला होता है I²R। ओ हाँ ठीक है। तो करंट आपका 1.2 है, वायर जी की जी। रेजिस्टेंस 10 है, तो I²R लगा दिया मैंने डायरेक्टली यहाँ पे। वाई की 6 थी, ठीक है। अब मैंने निकालना है C का पोटेंशियल। तो जो सी बी के क्रॉस वोल्टेज आ रही है दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ सी। इस तरह डी का पोटेंशियल कौन सा होगा, जो 2 ओम की वोल्टेज है। ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम, अगर आपको याद हो I R लगा के, तो हम्म। 1 पॉइंट इसमें करंट जो है 1.2 था और इसकी रेजिस्टेंस 6 होगी बिकॉज 40 सेंटीमीटर मींस 4 ओम, 1 मीटर 10 ओम, 40 सेंटीमीटर 4 ओम, इसलिए 60 सेंटीमीटर इनकी रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम होगी। V इज इक्वल टू I R। इसका मतलब है VC जो है वो 7.2 है, और इसी तरह VD जो होगा वो 2 × 2 4 वोल्ट होगा। अब मुझे C का पोटेंशियल मालूम है, मुझे D का पोटेंशियल मालूम है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस विल बी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D इज VC माइनस VD। इस तरह जब भी आपसे कहा जाएगा कि दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो आप दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल निकालेंगे और उनमें से
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दैट विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस. So here the potential difference comes out to be 3.2 volt because C का पोटेंशियल 7.2 है और D का पोटेंशियल 4 वोल्ट है. वो कहते हैं जी, ये वायर रेजिस्टेंस आपने निकालनी है, उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है, उसका डायमीटर 0.36 है और रेजिस्टिविटी 5.1 10 - 7 है. हमने रेजिस्टेंस निकालनी है. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल ओवर ए. रो हमें मालूम है, लेंथ मालूम है, एरिया के लिए हम पाए डी स्क्वायर बाय 4 इस्तेमाल करेंगे या पाए आर स्क्वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बिकॉज 0.36 मिलीमीटर का मतलब है 0.18 इज द रेडियस. इसको मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया ताकि मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकूं. तो पाई आर स्क्वायर विल गिव मी द एरिया एंड फ्रॉम हेयर द रेडियस रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 2.5. अगेन वी हैव पैरेलल सर्किट. ए बी इज द वायर और इसके अलावा 2.5 आगे एक और रेजिस्टर भी लगी हुई है. इसके पैरेलल जो है एक और वायर लगाई है हमने जो कि सी डी वायर है. वो कहते हैं व्हाट इज द करंट सप्लाइड बाय द सेल. अब वो ये वही क्वेश्चन है कि सेल से जो करंट आ रहा होगा उसका एक हिस्सा वायर ए बी वाले ब्रांच में फ्लो करेगा और दूसरा वाला हिस्सा सी डी के ब्रांच में फ्लो करेगा. सो वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ सी डी एज वेल. सी डी के बारे में बताया गया है कि a uniform wire CD is connected across the terminals. It has a length of 100 सेंटीमीटर. पहले की लेंथ 50 थी, इसकी लेंथ डबल हो गई है. पहले का डायमीटर 0.36 था, इसका डायमीटर हाफ हो गया. तो पहली बात तो ये हमें सीडी की रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी. लेंथ इज डबल्ड और डायमीटर अगर आप हाफ कर देते हैं तो एरिया इज रिड्यूस टू 1/4. If I simplify that, I get 8 रो एल ओवर ए और रो एल ओवर ए की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूं 2.5. So RCD is equal to 8 times 2.5 which is 20 ohms. अब मैंने CD के अंदर करंट निकालना है. EMF उन्होंने में दिया हुआ है, EMF is 6 volts. AB वाले ब्रांच में ये 2.5 है, ये भी 2.5 है, तो टोटल रेजिस्टेंस 5 हो जाएगी. तो दोनों के मैं करंट निकालूंगा 6 डिवाइड बाय 5 एंड 6 डिवाइड बाय 20 और दोनों करंट्स को मैं ऐड करूंगा I1 प्लस I2. दैट विल बी द करंट फ्रॉम द सेल. ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन जैसे पिछले वाला पार्ट था, सिर्फ उन्होंने वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर दी है. अब वो कहते हैं जी कि एम और एन ये दो पॉइंट्स हैं जो मिड पॉइंट्स हैं ऑफ द टू ब्रांचेस. ए एम ए बी का मिड पॉइंट जो है वो एम है और सी डी का मिड पॉइंट जो है वो एन है. पहले वो कहता है व्हाट इज द पावर ट्रांसफॉर्म इन ए बी आई स्क्वेयर आर. रेजिस्टेंस ए बी की हम निकाल चुके हैं, करंट 1.2 था, तो ये आपकी पावर आ गई इन ए बी. अब वो कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन. 6 वोल्ट है तो एन का तो स्ट्रेट वे मैं निकाल सकता हूं क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो आधी वोल्टेज पहले होगी. एन से ऑनवर्ड डी तक जो है वो 6 वोल्ट की हाफ होगी 3 वोल्ट. मगर एम का हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा. ये 1.25 है, ये 2.5 है. तो V इज इक्वल टू आई आर. टोटल रेजिस्टेंस ऑनवर्ड विल बी 1.25 प्लस 2.5 4.5 वोल्ट बन जाती है यहां पे. सो पोटेंशियल ऑफ M विल बी 4.5. पोटेंशियल ऑफ N स्ट्रेट अवे 0.3 into 10 3 वोल्ट बन जाएगा. एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी दिस. आई जस्ट अगेन थोड़ा सा मैं ये ऐड करता हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ये आपका 1.25 आ गया. दिस इज 1.25. टोटल रेजिस्टेंस
1.25 प्लस 2.5 आएगी। और एन की जो वोल्टेज है वो टोटल रेजिस्टेंस आपकी 20 ओम थी। सो जस्ट वन सेकेंड, दिस इज 10 ohms प्लस 10 ohms, दिस इज 20 ohms। तो 10 ohms की हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डिफाइन ओहम, R is equal to V over I. Resistance is 1 ohm if the potential difference is 1 volt and the current is 1 ampere. We have wires and we have a bulb, filament. They have given us the diameter of the filament, diameter of the wires and the filament, length of the wires, length of filament, connecting wires, resistivity of the filament, and the resistivity of the wires. We have to find the resistance of filament and resistance of collecting wires. Resistance is given by rho L over A. So फिलामेंट के लिए तो हम स्ट्रेट वे रो एल ओवर ए स्ट्रेट वे लगा लेंगे, मगर डायमीटर अगर 14 डी है तो एरिया विल बी इक्वल टू 14 स्क्वायर इंटू ए, बिकॉज जब आप पाई डी स्क्वायर बाय 4 करेंगे, डी की जगह 14 डी आएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये 14 स्क्वायर इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि वायर्स का डायमीटर 14 स्क्वायर टाइम इंक्रीज कर रहा है। रिप्लेस इट, rho L over A for filament and 0.028 rho for wires, length 7L and area is 14 square. And if you simplify that, you get the answer as 1000. That means resistance of filament is 1000 times greater than the resistance of the wire. Use information to explain qualitatively why the power dissipated in filament is the filament wire of the lamp is greater than the total power dissipated in the connecting wires. A power is given by I square R and they both have same current because they are in series. Power I square R and they are in series. Filament has a resistance 1000 times greater. So it will have more power dissipated in lamp than in the wires. फिर वो कहते हैं जी 12 वोल्ट बैट हमने लैम्प दिया हुआ है और 6 वॉट इसकी पावर है, तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स। यहां पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। फिलामेंट की रेजिस्टेंस आ गई है 24 ओहम्स। वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स इज 1000 टाइम लेस, so 24 divided by 1000, we get the answer as 24 10 raised to power minus 3 ohms. ठीक है सर। वो कहता है डायमीटर ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज डिक्रीज। अगर आप डायमीटर कम कर देंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, सॉरी एरिया आपका जो है वो कम हो जाएगा। इफ एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। रेजिस्टिविटी रिमेन्स द सेम। रेजिस्टेंस फिलामेंट वायर, अब कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप रेजिस्टेंस और वायर बढ़ा रहे हैं तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा, हीटिंग इफेक्ट कम होगा तो फिलामेंट की रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। तो वही हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे